बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वर्चुअल कैंपस की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर फ़ाद मुनीर अब्बासी हूँ और आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ का 28वां लेक्चर है। शुरू करेंगे विद द लेआउट ऑफ टुडेज़ लेक्चर। एट द स्टार्ट रूटीन में जैसा कि चल रहा है, हाईलाइट्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, ज़रा ब्रीफली प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करेंगे, उनको रिकॉल करेंगे ज़रा याद दहानी के लिए। देन विल गो थ्रू सम कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़े हैं, थोड़ा सा उनको दोबारा आपको याद कराऊंगा क्योंकि आज के लेक्चर में उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो होगी, इस लिहाज से थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करेंगे एट द स्टार्ट। Then we'll go through the laminar flow between two wide parallel plates, the plane Couette and plane Poiseuille flow, and at the end of this lecture we'll summarize whatever we did in today's lecture. आज का जो लेक्चर है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गो के प्रेजेंटली जो हमारी थीम चलती आई है, हम साथ साथ एप्लीकेशंस को थोड़ा बहुत डिस्कस ज़रूर करते हैं। जहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई पर्टिकुलर इक्वेशन हमने स्टडी की, साथ साथ हम चीज़ों को अप्लाई भी करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स के ऊपर। जहाँ पे भी हमने कोई जेन्युइन प्रिंसिपल या मैथमेटिकल इक्वेशन देखी, हमने उसकी यूटिलाइजेशन इन द प्रैक्टिकल फ्लो प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की। फॉर इंस्टेंस बर्नौलीज़ इक्वेशन के लिए, बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन के लिए या आयलर्स इक्वेशन के लिए हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी साथ साथ डिस्कस किए। बट आज के लेक्चर की जो ख़ास बात है वो ये है कि हम एप्लीकेशंस को एक दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे, जो रियल वर्ल्ड फ्लो प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सारी चीज़ों को कंपाइल करके, जैसा कि मैंने इस कोर्स के स्टार्ट में आपको बताया था कि हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक इक्वेशंस हैं या थ्योरम्स हैं, इन सबको स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि हम एट द एंड ऑफ दिस कोर्स एप्लीकेशंस की तरफ जा सकें, उनको अप्लाई कर सकें। सो अभी तक हम जो कुछ करते रहे इस पर्पज़ के लिए करते रहे हैं कि हम उनको अप्लाई कर सकें। सो आज से ऑनवर्ड्स इन 3-4 लेक्चर्स के अंदर हम एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो फोकस अपना प्रिसाइजली रखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडेज लेक्चर। और आज के लेक्चर में लेमिनर फ्लो बिटवीन टू वाइड पैरेलल प्लेट्स डिस्कस करेंगे, जिसके पर्टिकुलर केसेस के अंदर द प्लेन कॉटे एंड प्लेन पॉइज़ौille फ्लो लाए करते हैं। चीज़ों को साथ साथ देखते जाएं और शॉर्ट लिस्ट करते जाएं, अपने माइंड के अंदर एक पैटर्न बनाते जाएं थ्रू ऑब्जर्विंग दिस लेक्चर कि हम किस किस्म के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के अंदर मददगार साबित होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको टेक केयर करना ज़रूरी है। थोड़ी बहुत वेरिएशन या कोई छोटी सी मिस्टेक या छोटी सी मिस इंटरप्रिटेशन हमारे एनालिसिस को बहुत ज़्यादा गलती की तरफ लेके जा सकती है। इसलिए तमाम छोटी बड़ी चीज़ों को जो है ऑन बोर्ड लेके चलना ज़रूरी है फॉर द एनालिसिस। बिकॉज टोल्ड यू, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तमाम चीज़ों को इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि मॉडलिंग जो प्रॉब्लम की है और फिर उसके सोल्यूशन और सोल्यूशन का एनालिसिस जो है, उनमें तमाम चीज़ों को, तमाम रियल फैक्टर्स को जो है वो आप ऑन बोर्ड लें ताकि एनालिसिस आपका रियलिटी और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के करीब करीब हो। प्रीवियसली वी स्टडीड अबाउट द बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट। हमने बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट को ज़रा डिटेल में देखा एंड आई टोल्ड यू कि किस तरीके से बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर देयर वाज अ बिग गैप बिटवीन द थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर्स। थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेटर्स और मैथमेटिकली जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वालों के सॉल्यूशंस जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से इतने ज़्यादा कंपैटिबल नहीं थे। यही वजह है कि देयर वाज अ बिग गैप बिटवीन द टू एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर जस्ट से abolished this gap, इस गैप को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। एंड आफ्टर द concept of the boundary layer, the results of the theoretical investigators were compatible with the experimental results. बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट के अंदर दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। एक है कि रीजन को हमने डिवाइड कर दिया, ओवरऑल फ्लो रीजन को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स के अंदर। एक द रीजन नियर टू द सॉलिड बाउंड्री एंड द अदर वन distant from the boundary. अब जो viscosity के effects थे according to the Prandtl, those were confined into the boundary layer or the region near the solid boundary, and outside that boundary layer the fluid mostly behaved as a inviscid fluid. So हमने flow की equations को भी जो है वो दोनों
रीजन्स के लिए अलग अलग सॉल्व करना शुरू कर दिया, एंड वी सॉ दैट दिस अप्रोच gave a very good results which were compatible with the experimental studies also. फर्दर पूरी डोमेन के लिए हम क्यों नहीं इसको सॉल्व कर पाए, या what was the main hurdle or major hurdle in solving these flow equations for whole flow regime. The problem was that the Navier-Stokes equations were complicated equations, those were non-linear and coupled equations. तो उन equations को solve करना for the whole flow was a very difficult task, and it still is at this moment of time to solve the Navier-Stokes equation for the whole flow regime. So that's why we divided into a region. By we, I mean obviously the scientists, and starting from the planter, we divided the flow region in two parts, and one the boundary layer and one the free stream layer. Then we went to the concept of the boundary layer thickness, which was the other major concept of previous lecture. Boundary layer thickness क्या चीज़ है, किस हद तक जो है वो विस्कोसिटी के इफेक्ट्स एक्सटेंड होंगे, और किस हद से बाहर हमारा फ्री स्ट्रीम फ्लो या इनविसिड फ्लो जो है वो स्टार्ट होगा. ये चीज़ हमने मेजर की, इसको हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के लिहाज से मेजर किया, एंड वी सॉ दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस मेकिंग यूज ऑफ द इंटेग्रल्स. बाउंड्री लेयर की थिकनेस किस तरीके से कैलकुलेट की जाए. सो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड ये चीज़ें थी जो हमने स्टडी की. इन टुडेज लेक्चर आई लाइक टू स्टार्ट विद, हमने जो प्रीवियसली चीज़ें पढ़ी उनको लेके चलेंगे. इफ़ यू रिकॉल दैट वी स्टडीड द वन डायमेंशनल फ्लो. व्हाट वाज द वन डायमेंशनल फ्लो? अगर उसकी आप स्टेटमेंट रिकॉल करें तो वो फ्लोज जिनकी स्ट्रीम लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स देती हैं, ऐसे फ्लोज जिनकी स्ट्रीम लाइन्स एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर हों, उनको वन डायमेंशनल फ्लो कहा जाता है. इन फ्लोज के लिए इन दैट लेक्चर एज वेल आई टोल्ड यू कि इसकी वेलोसिटी फील्ड आपको पर्टिकुलरली शो कराऊंगा, एंड हियर इट इज कि वन डायमेंशनल फ्लोज के लिए द वेलोसिटी फील्ड और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक मटेरियल कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है. अमूमन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि वन डायमेंशनल फ्लो के लिए हम किस तरीके से जो है वेलोसिटी फील्ड को डिफाइन करेंगे, या वेलोसिटी फील्ड को देखते हुए हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं कि ये फ्लो वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल. सो हियर इट इज, अगर आप इसको थोड़ा डीपली देखें तो वन डायमेंशनल फ्लो के लिए जो वेलोसिटी फील्ड गिवन है, इन द फर्स्ट पार्ट इट ओनली हैज द आई कॉम्पोनेंट, बट ये आई, जे और के नहीं डिसाइड कर रहे कि फ्लो वन डायमेंशनल है. इट्स द एक्स and the only x appearing in this equation. There is only x and no y or z appearing in this equation, so this is a one-dimensional flow. Likewise, for the two-dimensional flow, there are two space coordinates, the x and the y appearing there, and for the three-dimensional flow, there are x, y, and z. So these are the 1, 2, and 3-dimensional flows, and you can distinguish them by taking a look at the velocity field. Then the momentum equations. Well, these equations are then the momentum equations. हमने Navier-Stokes equation जब start की तो I told you that according to the law of conservation of momentum, ये रिलेशनशिप हमने फॉर्म किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सर मैंने आपको उस टाइम पे भी ये बताया था कि क्यों मोमेंटम इक्वेशंस कहा जाता है, वेयर आई टोल्ड यू दैट मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी, एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑब्वियसली फॉर कांस्टेंट मास विल गिव यू द फोर्स. सो द थिंग इज दैट जब जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर हम मोमेंटम इक्वेशंस को लिखते हैं तो उनकी ये फॉर्म होती है, और ये फॉर्म यू पीपल शुड बी फेमिलियर विद दिस. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए, दिस इज डाइवर्जेंस, दिस इज द कॉची स्ट्रेस टेंसर. अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए, मेकिंग यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेस टेंसर, देन वी गेट these three equations, the x, y and z components of the momentum equations. यहाँ पे रो फ्लूइड की डेंसिटी है, u, v and w are the x, y and z components of the velocity respectively, and बाकी जो tau हैं, tau subscript x, y or x, z or anything like that, the taus are the shear stresses or the non-diagonal components of the stress tensor. Expressed in the metric form, matrix form obviously.
and the sigmas are the normal stresses or the diagonal components of the stress tensor, and B is the body force, and X, Y, Z denote the X, Y and Z components of the body force. So these are the momentum equations or the component in the component form. And अगर आप अब ये जो equations हैं, these are generalized form of the momentum equation for any fluid. अगर आप इन momentum equations को specify करेंगे for the Newtonian fluids only, then we'll get the Navier-Stokes equation. एंड अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए और कांस्टेंट विस्कोसिटी के लिए नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन लिखें तो उसकी ये फॉर्म बनती है. सो अगेन थोड़ा सा रिकॉल कर लें और इस चीज़ को समझ लें कि द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंटम एंड नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इज दैट नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस आर आल्सो मोमेंटम इक्वेशंस बट फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स ओनली, वेयर एज द मोमेंटम इक्वेशंस आर जनरलाइज्ड equations and are valid for any type of fluid. It can be non-Newtonian, it can be Newtonian as well. पर्टिकुलरली अगर आप न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इसको राइट डाउन करें तो इट विल टेक द शेप ऑफ द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. नाउ इसमें हर टर्म मैंने टर्म बाय टर्म आपको इसका एनालिसिस भी किया था, हमने देखा भी था कि अगर हम इसमें सिर्फ विस्कोसिटी के इफेक्ट्स जीरो करें, ये तमाम विस्कोसिटी के इफेक्ट्स जीरो करें तो इट विल गिव अस द आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच वाज वैलिड फॉर द इनविसिड फ्लो. ऐसे फ्लूइड्स के लिए वैलिड है जहाँ पे विस्कोसिटी के इफेक्ट्स जो हैं जिन फ्लूइड्स के लिए जीरो हैं, एंड बॉडी फोर्स ऑब्वियसली इज देयर. पर्टिकुलरली अगर विस्कोसिटी को एंड वेलोसिटी दोनों को जीरो कर दें then we'll get the basic hydrostatic equation for this case. So these equations are the generalized equations and we can reduce them into the Euler's equation of motion. अब इन equations को use करते हुए obviously we'll carry out our analysis. Applications के लिए अभी तक सिर्फ non-Newtonian को नहीं डिस्कस करेंगे बल्कि we'll go for the Newtonian fluids only because this is the start of the applications for you, and in the later classes or in the advanced courses related to the fluid mechanics we'll go towards the non-Newtonian fluids as well. So non-Newtonian fluids के लिए keep in mind the change will be here in this stress tensor. Stress tensor non-Newtonian fluids के लिए different type of, जैसे कि हमने शुरू में non-Newtonian fluids की different types पढ़ी थी, so मुख्तलिफ types of non-Newtonian fluids के लिए stress tensors की जो है मुख्तलिफ फॉर्म होगी जो कि यहाँ रिप्लेस करने के बाद हम उनके लिए परस्यू कर सकते हैं. Now the laminar flow between two wide parallel plates. दो wide parallel plates हैं जी, हमने define किए हैं axis in such a manner that x-axis lies along the length of the plates and y-axis lies normal to it, and the z-axis lies normal to both x and y. This O represents the origin and the flow is in x direction alone. It is assumed that the flow is in x direction. Now let us consider a steady state laminar flow of an incompressible fluid with constant viscosity between the two wide parallel plates of infinite length. The velocity and pressure fields for the problem are determined by carefully analyzing the initial and boundary conditions, then solving the Navier-Stokes equations and the continuity equation. Now देखें, जब भी कोई given flow problem we have to solve, firstly analyze it carefully. पहली चीज़ है क्योंकि आपने जब governing equations लिखनी है तो it's very important कि आपको पता हो कि what you are tackling. सबसे पहले ये देखें ऑब्वियसली आइदर हम फ्लूइड मैकेनिक्स के किस डोमेन के अंदर फॉल करते हैं. पहली चीज़ कि आया वी आर डीलिंग विद फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स. इफ वी आर डीलिंग विद द फ्लूइड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम देन विल गो फॉर द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, एंड इफ वी आर डीलिंग विद द फ्लूइड इन मोशन देन विल गो फॉर द फ्लूइड डायनामिक्स. फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप कैटेगरीज हैं. रिकॉल आपको करा रहा हूँ ताकि एक दफ़ा यू शुड गो थ्रू दैट. अगर तो we are dealing with the ideal fluid or inviscid fluid, which is obviously a theoretical form, so we'll go for the Euler's equation of motion because Euler's equation of motion are the equations of motion which tackle the motion of the ideal fluid. And if we are dealing with the real fluids, then we have to pursue with the momentum equation. अब momentum equation तक अगर हम पहुंच गए हैं तो then we have to categorize कि जो fluid हम टैकल कर रहे हैं आइदर इट इज़ न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन. अगर न्यूटोनियन फ्लूइड है देन सिंप्लीफाइड फॉर्म और द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन वी विल यूज़, एंड फिर पर्टिकुलरली मजीद देखेंगे कि आया विस्कोसिटी इज़ कांस्टेंट
and the flow is steady or unsteady, or the body forces are absent or present, or the fluid is compressible or incompressible. तो इन तमाम फैक्ट्स को ऑन बोर्ड लेके इनको डिस्कस करते हुए हम अपनी गवर्निंग इक्वेशंस राइट डाउन करेंगे. Then through careful analysis of the equations and the boundary conditions we will solve. अब equations और boundary conditions तक अगर हम पहुंच गए और हमने उनको correctly write up कर लिया तो फिर mathematics के students के लिए ये मुश्किल नहीं है कि उन governing equations को solve करके उनका solution obtain किया जाए, क्योंकि अभी तक आप ODs and PDs से काफ़ी सारे familiar होंगे कि हम किस तरीके से इनको pursue करते हैं और solve करते हैं. But वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ केयरफुल एनालिसिस होगा, और ये जो नॉलेज हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का हासिल किया है from all these lectures and from this basic course of fluid mechanics, we have to utilize each and every bit of it to make sure that our analysis is pursuing in the right direction. Now, firstly, take this into consideration that this is a steady state laminar flow of an incompressible fluid with constant viscosity. So चूँकि हम सिर्फ न्यूटोनियन फ्लूइड की डोमेन के अंदर हैं, तो हमें जो गिवन फैक्ट्स है दैट इज द स्टेडी स्टेट, द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड द कांस्टेंट विस्कोसिटी. सो हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और कांस्टेंट विस्कोसिटी के लिए है, वी विल स्टार्ट विद दोज इक्वेशंस, एंड फॉर दोज इक्वेशंस वी हैव simply have that u partial u by partial x plus v partial u by partial y plus w partial u by partial z is equal to -1 by rho. अच्छा, ये देखते चलें. यहाँ पे चूंकि partial u by partial t था जनरलाइज्ड इक्वेशन के अंदर, बट सिंस वी आर डीलिंग विद द स्टेडी स्टेट लैमिनर फ्लो, सो हमने partial u by partial t we have skipped, and the density which was here I have just multiplied it, divided with the density on the both sides. So -1 by rho partial p by partial x. These are the Navier-Stokes equation for incompressible fluid with constant viscosity, plus mu by rho partial square u by partial x square plus partial square u by partial y square plus partial square u by partial z square. This is the x component of the momentum equation or the Navier-Stokes equation, and we name it as equation 1. Now similarly write down the other two components of the Navier-Stokes equation, and which is v, or rather it will be u partial v by partial x plus v partial v by partial y plus w partial v by partial z equals -1 by rho partial p by partial y plus mu by rho partial square v by partial x square plus partial square v by partial y square plus partial square v by partial z square. This is equation 2. And the z component of the Navier-Stokes equation, which states that u partial w by partial x plus v partial w by partial y plus w partial w by partial z. This is equal to -1 by rho partial p by partial z plus mu by rho partial square w by partial x square partial square w by partial y square plus
partial square w by partial z square and name this as equation 3. So हमने Navier-Stokes equation उसके तीनों components जो हैं हमने write down कर लिए for the given flow field, which was say incompressible. That's why we have used the incompressible form of the Navier-Stokes equation, and it was steady state, so partial derivative with respect to t have vanished here. Further, and the continuity equation, एक तो Navier-Stokes equation and the next one is the continuity equation. We will write up the continuity equation for the incompressible fluids, which stated that del dot v is equal to 0, or in other words partial u by partial x partial v by partial y plus partial w by partial z is equal to 0, and name this as equation 4. Keep in mind that it should be obvious, but again let me write it down, that velocity field is given as u, v and w. U, v and w are the x, y and z components of the velocity respectively. Now for the given flow field, it is assumed that the flow is only in the x direction, so the y and z components of the velocity and all their derivatives should be equal to 0. That is, that the flow is occurring in the x direction alone. So v and w and their derivatives are all 0. Since the flow is only occurring in the x direction, so the only non-zero component of the velocity will be the x component, and all the other components of the velocity will be equal to 0. Now for flow through wide parallel plates, the end effects are neglected and the flow field is assumed to be two-dimensional. So two-dimensional flow field के लिए we'll see how we pursue. तो चूँकि x component के अलावा बाकी तमाम components velocity के 0 हो गए, तो we will reduce the components of the Navier-Stokes equation and the continuity equation for this flow field. V, W and all their derivatives are equal to 0. तो देखेंगे हमारी इक्वेशन के ऊपर फर्क क्या पड़ता. इक्वेशन 1 में से क्या क्या चीजें सर्वाइव करेंगी? U, which is non-zero, and partial u by partial x. Since u is non-zero, so its derivatives should stay intact and they won't be equal to 0. Since v is equal to 0, so this term will vanish. W is equal to 0, so the third term on the left hand side will also vanish. Now further, minus 1 by rho partial p by partial x, since we do not know anything about the pressure, so it will stay intact. Again, partial u by partial x will stay intact, partial u by partial y will stay intact, and partial u by partial z will stay intact also. अब फर्दर चूँकि इक्वेशन 2 और 3 में तमाम जो डेरिवेटिव्स हैं वो आर कंसर्न्ड विद द y एंड z कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, या v और w के कंपोनेंट्स या तो v और w के फॉर्म में हैं या उनके डेरिवेटिव्स के फॉर्म में हैं, तो तमाम ये डेरिवेटिव्स जो हैं ये वैनिश कर जाएंगे एंड ओनली टर्म विल सर्वाइव is partial p by partial y and partial p by partial z. V, again I'm repeating to remove your confusion, that v and w and all their derivatives will be equal to
0. So equations 1 to 4 are reduced to equation 1 में से क्या बच गया? On the left hand side it's partial u into partial u by partial x, and right hand side पूरी की पूरी will stay intact. So write it down that u partial u by partial x is equal to minus 1 by rho partial p by partial x plus mu by rho partial square u by partial x square plus partial square u by partial y square plus partial square u by partial z square. Name this as equation 5. And equation 2 में से देखें क्या चीज़ survive करेगी. Since v के तमाम derivatives 0 हैं, so left hand side will completely be equal to 0, and again due to the same reason this whole term, the second term on the right hand side, will also be equal to 0. So the only term which will survive is partial p by partial y equal to 0, and partial p by partial y is equal to 0. Name this as equation 6. And from equation 3 we'll get that partial p by partial z is equal to 0. इसको equation 7 का नाम दे दें. And from continuity equation, that is equation 4. Equation 4 से इस assumption की वजह से हमें क्या मिलेगा? We will simply get equation 4 में देखें सिर्फ u का derivative will survive and both the other terms will be equal to 0. So we'll only get partial u by partial x is equal to 0, and this is named as equation 8. Now it is very important, इस equation 8 को अगर आप देखें तो u is not a function of x, and we have a derivative of u with respect to x here and double derivative of u with respect to x here as well. So this equation will further reduce equation 5, and we'll see how is it acts upon. Abhi, before pursuing the analysis further, थोड़ा सा टर्म बाय टर्म चीज़ों को देखते चले जाएं कि इसका मतलब क्या, ये जो सिंप्लिफिकेशन हमने की है इसके आउटकम्स क्या. Firstly, that this equation 8 tells us u is not a function of x. U is independent of x, so there is no change in u in the x direction. Also, it is further assumed that there is no flow in the z direction, so u won't be a function of z again. So u x or z का function नहीं रहेगा, तो it means that u will only be the function of y. Further, this p is not a function of y. Equation 6 states that p is not a function of y, and equation 7 states that p is not a function of z also. So the pressure will only be the function of x alone. Write these things down from equations 6 and 7. P is not a function of y and z. चूँकि p y और z का function नहीं है, तो we can simply say that it is only the function of x alone.
Further, we have already assumed that no flow is occurring in the z direction and the flow field is two-dimensional. Thus, we conclude that the u is not a function of z, and from equation 8 you can see that u is not a function of x also. So u is only the function of y. अब अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन 8 को हम यूटिलाइज करें in our equation 5, so we will simply get that partial p by partial x is equal to 1 by rho, obviously is here, mu by rho partial square u by partial y square. Since p is not a function of y and z and u is not a function of x and z, तो हम इन partial derivatives को replace करके total derivatives की form के अंदर लिख सकते हैं, और this density will be cancel out and we can multiply it on the both sides to get rid of it. So we simply get that dp by dx is equal to, say, mu into d square u by dy square, and name this as equation 9. So this is our reduced and modified equation for this flow problem. ये simplified equation जो है हमें मिली है थ्रू आवर एनालिसिस. जो हमने एनालिसिस के अंदर सिंप्लीफिकेशंस की, उन सिंप्लीफिकेशंस की वजह से ये इक्वेशंस हम नेवी स्टोक्स इक्वेशन से चले और यहाँ तक पहुँच गए. फर्दर इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि चूंकि हमने नेवी स्टोक्स इक्वेशन के अंदर बॉडी फोर्स क्यों नहीं हमने रिप्रेजेंट की, बिकॉज वी हैव आल्सो अज्यूम्ड दैट देयर आर नो बॉडी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लो, एक्टिंग ऑन द फ्लूइड. So, अगर body forces present होंगी तो then again we have to take those body forces into account as well. Either it's due to gravity or due to electromagnetic forces. जिस भी वजह से हो, we have to take the body forces into account. But चूँकि हमने simple case से start किया है, so we have just started without the body forces. Now, ये एक simple equation, second order differential equation, and obviously I have seen that this is not partial, this is total derivative with respect to y square. So here it is. So this is equation 9 is our differential equation or the required equation. इस equation को अगर हम solve करेंगे तो solve करके we can find out the velocity of the fluid, and then we can obviously go for the further analysis. But देखें तो दो unknowns हैं इस equation के अंदर, velocity उसका x component which is u, and the pressure itself, pressure भी एक unknown है. In order to determine this, we have to assume किसी एक की velocity, किसी एक की value जो है वो हमें known होनी चाहिए to find out the value of the other. So at this point of time usually experimentally verify किया जाता है कि आया pressure की क्या value है, या given flow conditions को मज़ीद देखते हुए हम pressure को analyze करते हैं कि pressure के लिए हम क्या assumption जो है वो ले सकते हैं which should be compatible with the experimental results and the total behavior of the fluid. But एक unknown की value जो है वो ज़रूर पता होनी चाहिए in order to completely know the value of the other. Equation 9, I will write this for you. Equation 9 has two unknowns. U and P. So we should know the value of one in order to determine the value of the other unknowns. We'll start with this that मुख्तलिफ केसेस यहाँ पे अराइज करते हैं. पहले हम केस 1 से गो थ्रू करेंगे. पहला केस जहाँ पे for the first case we assume different assumptions that P is equal to constant, pressure constant है,
So if pressure is constant, then dP by dx is equal to 0. For a constant pressure, agar to pressure constant hai, then obviously its derivative will be equal to 0. So agar derivative of pressure is 0, then from equation 9 the double derivative of velocity is equal to 0. So there will be no flow. Only flow, कोई चीज़, कोई एजेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो फ्लूइड को मूव कराए. इन दैट केस अगर प्रेशर कांस्टेंट है एंड प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0, तो फिर देयर वोंट बी एनी मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि ना तो बाउंड्रीज मूव कर रही हैं, ना फ्लूइड मूव कर रहा है, एंड फर्दर द प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो in order to for the fluid to be in motion, we need to set our one of our plates into motion. अगर आपको याद हो, हमने जैसे flow between two parallel plates जब शुरू में हमने डिस्कस किया था, तो we assumed that one of the boundary is moving with a certain velocity. वो केस यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज जो एजेंट्स फ्लूइड को मूव करा सकते हैं उनमें से बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, अगर बाउंड्रीज एट रेस्ट हैं तो फ्लूइड वोंट बी मूविंग. इफ प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0, देन फ्लूइड वोंट बी मूविंग. तो कोई तो चीज़, कोई तो फैक्टर ऐसा हो जो फ्लूइड को मूव कराए, कोई तो चीज़ जो है फ्लूइड के मोशन में मददगार साबित होनी चाहिए टू सेट इट इन मोशन. सो for a constant pressure gradient, it is necessary that one of the plates is moving with some velocity. It is necessary to maintain the flow through the movements of the boundary. Boundary को मूव कराना ज़रूरी है. It is necessary to maintain the flow through the movements of the boundary. Since pressure is not making it move, so the boundary should set the fluid in motion. In this case, it is assumed that the upper plate is moving at velocity, say constant velocity capital U, and the bottom plate is at rest. अच्छा, अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो प्रेशर जीरो के लिए, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रेशर ग्रेडियंट इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वेशन हमें कुछ केसेस के अंदर एक ट्रिवियल सोल्यूशन भी देगी, और दैट विल बी द u इक्वल टू 0. अब u इक्वल टू 0, मैथमेटिकली टेकिंग अ लुक एट इट, u equal to 0 is a trivial solution which gives us no information about the flow. So in order to maintain the non-zero solution, to get the non-zero solution, or to maintain the velocity field, there should be a motion somewhere at least. Then the motion comes through the boundaries, and we assume that the upper plate is moving at a velocity capital U and the bottom plate it is at rest. Okay,
for further analysis or for your interest, you can also assume that the bottom plate is moving and the upper plate is at rest, or you can say that the both upper and lower plates are moving with some constant velocity, say u, या इसको आप कोई भी नाम दे दें, it will pursue like that. Now, as using dp by dx equal to 0 in 9, results in dp by dx equal to 0 equation 9 के अंदर आप पुट करें तो you will get d square u by dy square is equal to 0, and name this as equation 10. Integrating equation 10 integrating equation 10 twice, we get u is equal to ay plus b. Simple second order homogeneous ordinary differential equation है, इसको दो दफ़ा integrate करेंगे तो we'll simply get this type of solution. Now a and b are constants जिनको हम determine करेंगे making use of the boundary conditions. Now for the boundary conditions, for example अगर मैं इस geometry को दोबारा draw करूं यहाँ पे for you people, take a look at this geometry. So this plate is at rest and this plate is moving with a constant velocity, say u. इस distance को दोनों प्लेट के दरमियान जो distance है इसको से b का नाम दे दें, or you can name it as h or anything which we have not used. So this is at y is equal to b, then we can assume that this is equal to y is equal to 0 here for the sake of simplicity. Now a and b are constants which will be determined making use of the boundary conditions. The boundary conditions are u is equal to 0 at y is equal to 0. जब u 0 है तो जब y 0 है तो u will be equal to 0, that is the lower plate is at rest, and when at y is equal to b or at the top plate it is moving with a constant velocity capital U. इनको अगर use करें to determine a and b, so you will simply get that using the boundary conditions, equation 11 takes the form small u is equal to capital U over b into phi. This is the solution of our flow problem.
This is the solution of our flow problem. और अगर आप इसकी बाउंड्री कंडीशंस को वेरीफाई करना चाहें तो अगेन यू कैन सी दैट फॉर y इक्वल टू 0 u विल बी इक्वल टू 0 एंड फॉर y इक्वल टू b u विल बी इक्वल टू कैपिटल U. एक और चीज यहाँ देखते चले which is of interest that this is a linear velocity profile. U is linearly proportional to y. So this is a linear velocity profile, or in other words it will be of the form like this. If I draw it for you, it will be of this form, a linear velocity field. अब आपको ये थोड़ी सी शायद फेमिलियर भी लगे क्योंकि जैसे कि हमने जब सॉल्व किया था इसको उस टाइम के ऊपर एनालिसिस नहीं था किया, बट वी सिंपली कंप्यूटेड द वेलोसिटी फील्ड फॉर द फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. इस डिस्टेंस को हमने b कहा एंड दिस इज से y इक्वल टू 0 and y is equal to b here, and the upper plate is moving with the velocity u. So this will be a linear distribution of the velocity. This type of flow is called the plane Couette flow. So this type of flow is named as the plane Couette flow, in which the pressure gradient is equal to 0 and the flow is due to the movement of the boundary or the uniform motion or uniform velocity of the plate. Now keep this thing in mind कि आप इसी एनालिसिस को रिपीट कर सकते हैं एंड मेकिंग यूज ऑफ द फैक्ट दैट द अपर प्लेट इज स्टेशनरी एंड द लोअर प्लेट इज मूविंग और बोथ ऑफ द प्लेट्स आर मूविंग. तो इस एनालिसिस को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ द असाइनमेंट और फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट यू कैन कंप्लीटली डिटरमिन व्हाट वी आर डूइंग हियर एंड व्हाट वी वांट टू अचीव थ्रू दिस एनालिसिस. फर्दर लेट्स डिस्कस द केस 2. Second case. P varies linearly in the direction of flow. And so अगर linearly P vary कर रहा है in the direction of flow that is x, then partial P by partial x or the total derivative in this case is equal to constant. Then dP by dx is equal to constant. अगर dP by dx is equal to constant, then for constant dP by dx इस dP by dx constant को हम कहाँ यूज करेंगे? We will use this value here in this equation 9. So if this is constant, we can simply integrate it with respect to y twice. Integration of 9 yields u is equal to 1 by 2 mu dP by dx y square plus ay plus b. I name this as equation 13. चूँकि dP by dx constant था, so we have y square here with 2 in the denominator and ay plus p
and we have named this as equation 3. Now, since there is a constant pressure gradient, so it's not now necessary, ज़रूरी नहीं है कि now plates should be moving. They can be moving or they can be at rest. क्योंकि flow की जो generation है वो through constant pressure gradient हमें available है. तो अब ऐसा नहीं है कि अगर हम plates को stationary लेंगे तो we'll get the trivial solution. It won't be the case. If the plates will be stationary, again the flow will be maintained through this dp by dx. So we can assume that both the boundaries are at rest. We can simply say that if this is the axis, x-axis, this is y-axis, this distance is b and this distance is again minus b, then u is equal to 0 at y is equal to b and u is equal to 0 at y is equal to minus b. So boundary conditions are for this flow boundary conditions for this flow system are u is equal to 0 for y is equal to plus minus b. दोनों plates are at rest. Now mark this as equation 14. Making use of boundary conditions, our equation 13 becomes in such a manner that these two conditions yield that a is equal to 0 and b is equal to minus b square over 2 mu dp by dx. Making use of this boundary conditions को इस्तेमाल करके we can compute the values of a and b here in this solution. और जो solution हमने determine किया है we'll simply calculate the values of a and b making use of these two boundary conditions, and we'll substitute these values back into the solution here. So this a and b की value अगर substitute करें तो our solution will take the form u is equal to, mark these equations as we have 14 and mark this as equation 15 here. So making use of this equation, this u will become minus 1 by 2 mu dp by dx. So our u becomes u is equal to minus 1 by 2 mu dp by dx b square minus y square, and or in other words you can write that in a manner that u max, which is the maximum velocity, into 1 minus y square over b square, and mark it where u max is equal to, or the maximum velocity is equal to b square over 2 mu dp by dx here. Or in other words, further the maximum velocity, if you want to determine the maximum velocity,
can be determined as maximum velocity. आप calculate कर सकते हैं. You are familiar with the concept of maxima and minima. So maximum velocity के लिए आप maxima का concept भी use करके इसको calculate कर सकते हैं, और by simply calculating the du by dy, or the first derivative of the velocity, which comes out to be minus 1 by 2 mu dp by dx into minus 2y dy by dx, or this is simply equal to y by mu dp by dx. And देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी कहाँ पे जीरो है. du by dy is equal to 0 at y is equal to 0. y equal to 0 पे हमने किस तरह 0 कर लिया, because it is given that since dp by dx is not equal to 0, because we have assumed a constant pressure gradient, so and also mu is not equal to 0 or infinity, so du by dx is equal to 0 at y is equal to 0, or u max, substitute the value of y equal to 0 and get the maximum value of the velocity, or u max is equal to minus b square over 2 mu dp by dx. This is how you will calculate the maximum velocity and the velocity is thus given as, the velocity is thus given as u is equal to minus 1 by 2 mu dp by dx to b square minus y square. So this is the velocity field which we have calculated, or the x component of the velocity which we have calculated making use of the fluid mechanics knowledge, or making use of the deductions we made by analyzing the flow field, or in other words you can simply write it down as u max 1 minus y square over b square. This is the velocity field for constant pressure gradient which is maintained. So we can say that the velocity field has the maximum value near the center of the channel. क्योंकि अगर आप इसकी ज्योमेट्री को दोबारा देखें, u is equal to 0 at y is equal to b, u is equal to 0 at y is equal to u is equal to 0 at y is equal to minus b, u is equal to 0 at y is equal to minus b. So y equal to 0 since occurs at the center of the channel, so this is y is equal to 0. So this length is say plus b and minus b equal to 2b of the two plates, and this only is the positive y, and below here is the negative y. So the maximum the velocity will be of a parabolic type like this, with maximum velocity occurring near the center of the channel, or u max, since the u max occurs at the
center of the channel, or at y equal to 0, which is situated at the center of the channel. So roughly this type of velocity field will be there, or a parabolic type. अब अगर आप इसको देखें तो it is proportional, not linearly proportional, it is proportional to y square. So and further the velocity is attains maximum value at the center of the channel, or at y equal to 0. You can improve the drawing here because I am never good at drawing things, so you can draw this figure in a better manner. Further, this type of flow is normally called the plane Poiseuille flow. This type of flow is usually known as the plane Poiseuille flow. इस किस्म के flow को हम plane Poiseuille flow कहते हैं, जहाँ pressure gradient जो है वो constant हो and the boundaries are at rest. Till our next lecture, अगर उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा मैं इसको involve करना चाहूँ तो take a look at this. Next lecture में तो चूँकि हम खुद भी इसको solve करेंगे कि अगर plates in motion हो तो तब कैसा phenomena होगा along with the constant pressure gradient. अब दोनों केसेस, जो प्रीवियस केस हमने केस 1 डिस्कस किया और ये केस 2, तो प्लेन कॉटे एंड प्लेन पॉजियाले फ्लो के लिए जो दो चीज़ें हमने डिस्कस की, अगर इनको हम कंबाइन करें तो देन हमारे रिजल्ट किस किस्म के होंगे. तो फॉर दैट नाउ इट इज इंटरेस्टिंग to check the combination of case 1 and 2 before the next lecture. And I leave it leave it for you till next lecture. नेक्स्ट लेक्चर तक मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली मैं इसको खुद करूँगा. कोशिश ये करें, ज़रा इंटरेस्टिंग है, ज़रा मैथमेटिकली आ गया, सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस और इक्वेशन पे थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ेगा एंड यू कैन सॉल्व इट very comfortably, making use of the knowledge of mathematics. Now with this I'll take you to the summary of today's lecture. In today's lecture we recall few concepts जो कि आज के लेक्चर में हमने यूज़ कर रहे थे, पिछली कुछ चीज़ें हमने रिकॉल की. Then we discuss the laminar flow between two wide parallel plates, or the plane Couette flow and the plane Poiseuille flow. ये दो किस्म के flows हमने डिस्कस किए, plane Couette and plane Poiseuille flow. Mathematically इनको देखा और compute किया. And also interestingly I left it to you कि आप next lecture तक ज़रा दोनों का combination अगर देखें before we pursue towards next lecture. Next lecture में obviously जब मैं दोनों के combination को लेके चलूँगा और solve करूँगा तो फिर ज़रा आप अपनी भी calculation सामने और साथ रखें कि हम next lecture में क्या करने लगे हैं, तो आपने क्या चीज़ें calculate की, कैसे ठीक किया, कैसे गलत किया, by comparing it with the next lecture. And with this I'll take you today's quote, and it reads that you may learn only one thing from a success, but you will always learn many things from a failure. कामयाब हो के शायद आप सिर्फ एक चीज़ सीखें कि कामयाब कैसे हुआ जा सकता है या किसी काम को ठीक तरीके से कैसे किया जा सकता है, मगर नाकाम हो के आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐसे लर्न करेंगे अपनी इनपुट से रिलेटेड, अपनी एफर्ट से रिलेटेड, अपनी इन्वायरमेंट से रिलेटेड और अपने से रिलेटेड लोगों
से वाबस्ता जो चीज़ें और जो उम्मीदें आपके पास हैं, आप ज़रूर वो चीज़ें लर्न करेंगे। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ की है कि हम नाकामियों से डरना छोड़ दें। फेल्यूर से हम अमूमन इसलिए डरते हैं कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हम नाकामियों से कुछ हासिल नहीं करते। बहुत से सबक हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लर्न कर सकते हैं, और वी डू लर्न। हमेशा जो कामयाबी की तरफ लेके जाने वाली चीज़ होती है वो नाकामी से ही हासिल हुआ करती है। ज़िंदगी इस तरह चलती है। सो फेल्यूर से डरे मत। आप किसी भी नाकामी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कामयाबी से शायद आप इतना ना सीखें जितना आप नाकामी से सीखेंगे। और ये दो चीज़ें बड़ी इररेलेवेंट हो जाती हैं। जहाँ पे आप मकासद से अपनी ज़िंदगी के मकसद और गोल को अचीव करते हैं, उसके लिए वर्कआउट करते हैं, तो फिर ये कामयाबी या नाकामी ये बहुत पीछे रह जाती हैं। बट अभी और कामयाबी नाकामी के पीछे रह जाने का कॉन्सेप्ट आपके लिए शायद समझना शायद इतना आसान नहीं होगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान में रखें कि फेल्यूर कोई बुरी चीज़ नहीं है, अनलेस कि आप ऑब्वियसली ट्राई ना करके फेल हो, दैट इज़ समथिंग एल्स। कोशिश ज़रूर करें, और कोशिश कभी भी रह नहीं जाती। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को बहुत सी आसानियाँ दे। टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड।